nose, got rose in my cup though. Started climbing my pole, she got me locked in on cup though. Cocaine in my nose, got rose in my cup though. Started climbing my pole, she got me locked in on cup though. Cocaine in my nose, got rose in my cup though. Started climbing my pole, she got me locked in on cup though. Cocaine in my nose, got rose in my cup though. Started climbing my pole, she got me locked in on cup though. Cocaine in my nose, got rose in my cup though. Started climbing my pole, she got me locked in on cup though. Cocaine in my nose, got rose in my cup though. Started climbing my pole, she got me locked in on cup though. Cocaine in my nose, got rose in my cup though. Started climbing my pole, she got me locked in on cup though. Cocaine in my nose, got rose in my cup though. Started climbing my pole, she got me locked in on cup though. Cocaine in my nose, got rose in my cup though. Started climbing my pole, she got me locked in on cup though. Hi everyone, I am Sumit from Glamour Car Accessories, Koramangala, Bangalore. आज हमारे पास एक सियाज गाड़ी आई है, इसमें हमने कम्प्लीटली एक ऑडियो सेटअप किया है एंड ऑडियो सेटअप इज़ फ्रॉम सोनी के ES सीरीज जो प्रीमियम सीरीज है सोनी के, वो इंस्टॉल किए हमने आज इसमें। तो स्टार्ट विथ सोनी का 9500 सिस्टम हमने इसमें डाला है जो 10.1 इंच सिस्टम है। अलॉन्ग विथ फ्रंट डोर पे कॉम्पोनेंट स्पीकर्स हैं, रियर डोर पे कोएक्शियल स्पीकर्स हैं, एक 5 चैनल एम्पलीफायर हमने यूज़ किया है, साथ में एक 12 इंच की सबवूफर है। ये कम्प्लीटली हाई रेज ऑडियो सेटअप है और हमने डुअल लो डैम्पिंग की है डॉक्टर आर्टेक्स की। आइए देखते हैं सिस्टम का कैसा फिनिशिंग आया है। इसमें हमने सोनी का 9500 सिस्टम जो कि
10.1 इंच सिस्टम है। इसकी आप फिट एंड फिनिश देख सकते हैं, परफेक्ट फिट बैठा है। और दिस कम्स विद वायरलेस कार प्ले, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, and has 24-bit DSP, which is fantastic for your sound processing and time alignment. Just show you a demo for an Android Auto. You see how quick the Android Auto works, and it's completely wireless. I think in this segment, this is the biggest system you can get from a premium brand, 10.1 inches, and the output is really well in this speed. This supports high-res audio, and हमने जो speakers और amplifier डाले हैं वो भी high-res हैं. Now let's see how a wireless Android Auto interface works in the system. Basically, this is the interface, and you can go to the Google Map here. You can also access your Spotify music, and then you can have all your call logs here. There's the call logs, and then you can also give a voice command through this button here. This is the application you can access. That's WhatsApp and YouTube Music. This is how the interface looks like in Android Auto. CarPlay is also wireless, and Android Auto is also wireless. फ्रंट डोर पे हमने सोनी ES के कॉम्पोनेंट स्पीकर्स डाले हैं जो 90 वॉट्स RMS स्पीकर्स हैं, और आप देख सकते हैं कि कम्प्लीटली कंसीडर्ड है। ट्यूटर हमने ओरिजिनल प्लेस पे फिटमेंट किया है इसका, और हमने इसमें डुअल लो डैम्पिंग की है फ्रॉम डॉक्टर आर्टिक्स। रियर डोर पे हमने सोनी के ES के कोएक्शियल डाले हैं, जो ये भी 90 वॉट RMS आउटपुट के स्पीकर्स हैं, बैक डोर पे डाले हुए हैं। आप देख सकते हैं डुअल लो डैम्पिंग करने के बाद में डोर्स काफ़ी हैवी जाते हैं, वाइब्रेशन नहीं आता, यू गेट वेरी गुड आउटपुट फ्रॉम द स्पीकर्स। हमने इसमें सोनी ES के 5 चैनल एम्पलीफायर यूज़ किए हैं, जिसका मॉडल नंबर है XM-SE5। जो 4 चैनल आउटपुट है दैट इज़ 100 वॉट्स RMS ईच आउटपुट, एंड द सिंगल चैनल आउटपुट इज़ अबाउट 450 वॉट्स RMS आउटपुट, जिसको हमने सबवूफर में कनेक्ट किया है। और इसके साथ में हमें वूफर बेस कंट्रोलर भी मिला है, जो हमने यहाँ एज अ OE प्लेसमेंट प्लेस किया है। आप इसकी फिट एंड फिनिश देख सकते हैं। तो यू कैन कंट्रोल द बेस फ्रॉम द रिमोट। लास्ट में हमने इसमें एक सोनी का 12 इंच सबवूफर फिट किया है, जो कि एक कस्टमाइज बॉक्स के साथ बनाया गया है। आइए उसकी फिटमेंट भी आपको दिखाते हैं। दिस इज द सबवूफर विद अ कस्टमाइज बॉक्स। इसकी फिटमेंट प्लेसमेंट आप देख सकते हैं। दिस इज अ 12 इंच सबवूफर व्हिच हैज 500 वॉट्स RMS आउटपुट। परफेक्टली एक अपने प्लेसमेंट पे है ये। नाउ लेट्स कम टू द प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। The Sony ES coaxial has an MRP of 20,000 rupees. The component has an MRP of 25,000. The 12-inch subwoofer has an MRP of 25,000. The 10-inch system has an MRP of 1,05,000, and the Sony 5-channel high-res amplifier has an MRP of 77,000 rupees. मेरे साथ इस कार के ओनर मिस्टर रंगनाथ सर है। सर आपका एक्सपीरियंस आज आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे? डेफिनेटली। तो मैंने एक्चुअली ग्लैमर कार एक्सेसरीज के बारे में गूगल रिव्यू से देखा था। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई केम टू नो अबाउट दिस कंपनी। तो आई डिडंट इवन नो लाइक हाउ व्हाट सॉर्ट ऑफ वर्क दे डिड, बट दे हैड लाइक स्टेलर रिव्यूज। तो मैं आ गया, आई गेव हिम मैसेज ऑन व्हाट्सएप। आई टोल्ड हिम लाइक आई वांट अ स्पेसिफिक सोनी का, बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डिसाइडेड कि मुझे यही चाहिए था बोल के। आई हैड अ वेरी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो चाहिए ही चाहिए था, और बड़ा स्क्रीन चाहिए था विथ HD रेजोल्यूशन एंड हाई रेजोल्यूशन ऑडियो भी। तो ये डिसाइड किया था, इनको मैंने मैसेज किया, आई टोल्ड कि ये चाहिए। दे इमीडिएटली टोल्ड मी द प्राइस, इमीडिएटली डिस्काउंट भी लगा दिया, एंड ही गेव मी द बेस्ट प्राइस। किसी से भी बात किया था, इन्होंने बेस्ट प्राइस दे दिया। मैं इमीडिएटली आई वाज लाइक 3 दिन में इधर था, एंड लाइक आई चलिए करते हैं। ये इंस्टॉल्ड इट, लाइक 2-3 घंटा लिया, दैट्स इट मैक्सिमम। उस दिन ज्यादा वेट भी नहीं हुआ, एंड लाइक 2 महीने यूज किया लगाने के बंदे, बिकॉज आई डिडंट नो कि क्या कैसे काम होने वाला था, कैसे इफेक्ट आने वाला था, वो कुछ पता नहीं था। फर्स्ट थिंग, नो इश्यूज व्हाटसएवर। डालने के बाद 2 महीने यूज किया, अभी कुछ भी इश्यूज नहीं आए हैं।
and on top of that the quality of the player itself is fantastic. मुझे जो नॉर्मल जो स्टॉक एंड्रॉइड प्लेयर या स्टॉक कोई भी था ना इसके अंदर, इट वाज रियली बैड. कंपेयर ही नहीं कर सकते, उतना बुरा था. लेकिन दिस इज लाइक लीग्स अहेड, इट्स इन कंप्लीटली लेवल ऑफ इट्स ओन. तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा लास्ट 2 मंथ्स ये यूज करने के टाइम में. देन आई डिसाइडेड चलो पूरा भी ऑडियो भी अपग्रेड कर ही लेते हैं, पूरा हाई रेजोल्यूशन करते हैं. तो दैट्स व्हाई आई वेंट विद एवरीथिंग एल्स दैट यू ऑलरेडी सीन हियर. तो दे हैव डन एवरीथिंग टुडे. इट वाज वेरी प्रोफेशनल, पूरा क्लीन है एकदम, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. इंस्टॉल करने के बाद मैं कार के अंदर गया तो आई वाज लाइक ब्लोन अवे. आई वाज सरप्राइज्ड कि इतना डिफरेंस कैसे आ सकता है बोल के. देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन योर स्टॉक ऑडियो एंड दिस हाई रेजोल्यूशन ऑडियो. मैं वही बोल सकता हूँ. There is no way for anyone to even capture the audio and then make you hear to it. You just have to sit inside the car and only then you'll realize कि कितना difference आ रहा है. तो right, so overall it was very good. And then even during the selection process of the speakers, उन्होंने बहुत actually internally decide किया and then recommended बड़ा वाला. I initially wanted to go for a 10-inch subwoofer, लेकिन उन्होंने बोला 12-inch के लिए जाओ तभी better effect आएगा. I agreed and it was worth it. तो अभी तो बहुत ही अच्छा सबवूफर साउंड भी आ रहा है, तो थैंक्स अ लॉट फॉर दैट. तो एंड देन एम्पलीफायर के टाइम में भी इन्होंने एक्चुअली ऐसे नहीं बोला कि चलो 4 चैनल के लिए जाओ, मोनो के लिए जाओ, सेपरेट करो. ऐसे दे रेकमेंडेड द बेस्ट वन डायरेक्टली. 5 चैनल वाला जो एक्चुअली एक ही सिंगल बॉक्स आता है, दोनों कंपोनेंट स्पीकर्स को एक्सियल और बाद में सबवूफर भी चला लेता है. तो yeah, it was fantastic. And then he also recommended about the damping पता था, but I didn't know like डबल लेयर चाहिए, सिंगल लेयर चाहिए, रूफ के लिए चाहिए, फ्लोर के लिए चाहिए, 1000 चीजें इसमें. So then he gave me his honest opinion from his personal experience, and then based on that we went with double layer for all the doors and then for the trunk also. So now it sounds amazing. So that's it. That I don't have anything else to add. So thanks a lot for it. So it was excellent work actually. Sir. One more thing, sir. I think the 5-channel amplifier from Sony is one of the first installation in India. Right. So what do you have to say about that, sir? I think the important thing for me was वो 2 बॉक्स का सेटअप जो था, 4 चैनल एंड देन मोनो, इट वाज जस्ट टू मच फॉर मी. मुझे जो है एक्चुअली एक ही बॉक्स चाहिए था एंड इट शुड हैव बीन अंडर द सीट. मुझे वो ट्रंक के अंदर डालने का मन भी नहीं था बिकॉज आई ऑलरेडी स्पोक टू अबाउट द रीजंस एंड दिस इज परफेक्ट फॉर दैट. एक्चुअली एक ही बॉक्स है जो सारे काम कर देता है. इट्स जस्ट परफेक्टली फिट्स अंडर द सीट एंड किसी को कुछ भी पता भी नहीं चलेगा कि वो है बोल के उधर. एंड देन द सेटअप एंड एवरीथिंग वाज लाइक ऑब्वियसली नॉट माय कप ऑफ टी, लेकिन थैंक्स टू सुमित एंड हिज टीम आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड. तो या, ग्रेट एक्सपीरियंस एक्चुअली. Thank you so much, sir. Thanks a lot for that. गीता ट्रैफिक